Hello everyone, konnichiwa. So today we'll be learning the hiragana particles characters, the first stage after which we'll be able to crack the JLPT N5. So let's start with it. Okay. So I mean, if you're appearing for JLPT N5, or I don't know if you are interested in learning Japanese and have been exposed to a certain level of Japanese language, so I'm sure you must be knowing what hiragana is. So hiragana is basically a foundation of Japanese writing, you know, because if you don't know hiragana, you can never learn Japanese language. Also, most of the times it is used for native words, particles, and verb endings. For JLPT N5, it is one of the most important things that you should know, without which you can't even score. I don't think so you can even score what 5 marks out of 180 in JLPT, right? So yeah, so let's start with hiragana. And again, when is hiragana used? It is used when kanji is unknown. So if you don't know what kanji is, kanji are a couple of characters which were adopted from Chinese language. So although they are foreign to Japanese, but they are still used at a very large level in the Japanese language, in Nihongo. Okay, so let's get started. शुरू करते हैं आप. तो अभी इसके अंदर जस्ट जस्ट एक सेकंड दीजिए मुझे. ओके, या सो इसके अंदर अभी देख रहे हो ये सारे चार्ट्स पड़े हुए हैं यहाँ पर. क्या है ये चार्ट्स सारे के सारे जितने कैरेक्टर्स है, जितने के जितने कैरेक्टर्स है हिरागाना में, वो रखे हुए हैं यहाँ पर. सो ऑल ऑफ दीज characters which are present in hiragana are present over here. I'm not covering katakana in this session. Probably the next session or the next video after this video will be katakana. So okay, let's start with hiragana. So hiragana में कैसे होता है? hiragana में वैसे ही होता है जैसे बाकी सारे लैंग्वेजेस में होता है. इट्स वेरी मच सिमिलर टू द इंडियन लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, तमिल, मराठी. It's very much similar. Like if you are able to speak Hindi or most of the Indian languages, uh, I'm sure you'll be able to learn the Japanese language at a quicker pace than the rest of the non-Indian language speakers. Like non-Indian language as in Europeans, Americans, and all of those, not Asians. So let's get started with the hiragana vowels. जैसे कि इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं AEIOU. पता है, वॉवल्स के बगैर तो मतलब इंग्लिश एकदम मरा हुआ ही है. इंग्लिश तो हो ही नहीं सकता वॉवल्स के बगैर. सेम वेज इन हिरागाना ऑल्सो देर आर वॉवल्स. इफ यू कैन सी हियर AIUEO, राइट? AEIOU, सिमिलर, राइट? सो अभी अगर मैं बोलूँगा कि हिंदी में भी होते हैं काइंड ऑफ वॉवल्स, आ ई उ ए ओ, पता है आपको, होते हैं ना. मतलब बहुत ही क्लोज है उससे ये वाले वॉवल्स, अगर आप समझ सकते हो. तो स्टार्ट करते हैं ए से नहीं, आ से. लेट्स गेट स्टार्टेड विद ए. Sorry, not with A, but with A. Although you can see this to be here as A, but it's not A. It's pronounced as A, like this. It's pronounced as A. So how do you remember A? वैसे तो अगर प्रैक्टिस करते जाओगे इस चीज़ को, ये अगर 10 बार 20 बार 30 बार लिखते जाओगे तो याद तो रहेगा, पर लॉन्ग टर्म में याद रखना ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है. यू नो,
थोड़े दिन के लिए तो 2-3 दिन के लिए तो आपको याद रहेगा, क्योंकि अब तो कैरेक्टर्स भी कम है, सिर्फ हिरागाना है, फिर काटाकाना आएगा, फिर कांजी आएगा, फिर आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो इसीलिए अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस कैरेक्टर्स for long term period, then you need to learn certain mnemonics. So what are mnemonics? I will give an example with A itself. Over here, this is A, right? So इसको कैसे याद रखें? How do we remember this? So usually as it's mentioned here, you can remember it by the A which can be found in this character. So this resembles A, yeah, like this. This is A, and also the vowel is A. So you should be able to remember it, क्योंकि कैरेक्टर में भी ए है और वॉवल भी आ है, तो इसको याद रखना इतना मुश्किल नहीं। पर मैं आपको और एक नेमोनिक सिखाऊंगा। आई विल बी टीचिंग यू वन मोर नेमोनिक विच इज एप्पल। ए फॉर एप्पल। सो ए फॉर एप्पल, ये कैसे काम होगा? यहाँ पर तो लेटर आ है बराबर, तो इसमें कैसे है कि एप्पल जो होता है फ्रूट, उसमें क्या होता है? वी हैव अ स्टेम, एक ऊपर स्टेम होता है, ये रहा स्टेम, ये स्टेम है, ये हो सकता है ये भी स्टेम है, और ये हुआ आपका एप्पल। ये जो फ्रूट होता है, द फ्रूट अदर देन द स्टेम, this can be this part, this will be the fruit. So this is the stem of the apple and this is the fruit, right? इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? सॉरी अगर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं हुई, क्योंकि मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ ड्रॉ करने को, बट स्टिल आई विल शो यू। इतना कुछ मुश्किल नहीं है, कैसे भी ड्रॉ करो। वैसे स्ट्रोक ऑर्डर होता है इसमें, बट आप आप मतलब आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, आपको ये याद रहना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि आप कैसे ड्रॉ करो, एक प्रोसेस होता है, पर आपको फॉलो करना ही है, इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो आगे जाके अगर आप जापान जाते हो, वहाँ पे कुछ आपको पेपर वर्क वगैरह करना है, वो सब करना है, किसी के सामने करना है, कोई देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो अलग बात है। बट अदर देन दैट यू कैन सिंपली रिमेंबर एज पर योर विश एंड विच इज़ बेस्ट फॉर योर लर्निंग। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा ये स्टेम आया, उसके बाद आया ये, तो थोड़ा थोड़ा अलग है, तो इसके अंदर मैं दिखाता हूँ। ये हुआ स्टेम, स्टेम बनाओ, गेट दिस स्टेम फर्स्ट एंड देन द एप्पल, हो गया आ। इसको याद रखो आ। जो नेक्स्ट वाला है वो है, हालांकि ये आय है, तो इसको प्रोनाउंस आय नहीं किया जाता, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज ई। How while speaking Hindi we say E, we don't say I, we say E. Same way, this is E, right? So इसको कैसे याद रखें? How do we remember this? So the mnemonics for this are easy, like they are given over here. I, two I's. That's the easiest part. Even I remember it that way. So this is one of your I. This is the other I. Two I's. अब तो याद रहना चाहिए, दो I हो गए. You can remember it. तो ये आपके दो I हो गए. These are your two I's. बस इतना ही है। तो उसके बेसिस पे आपको याद होना चाहिए ई। ई आई यानी कि झट से दिमाग में याद आना चाहिए ई। जैसे एप्पल से याद आता है आ, वैसे आई से आएगा ई। हो गया। उसके बाद है तीसरा। तीसरा वाला जो है वो है यू नहीं ऊ। ऊ ऊ
तीसरा वाला है ऊ, समझ सकते हो, ऊ। तो ये तो ये जो ऊ है, इसको कैसे याद रखें? इसको भी याद रखना इजी है। सो अगर हमें ये जो यहाँ पर जो ये बेसबॉल प्लेयर बना है, अगर आप डोरेमोन ये सारे कार्टून्स, मांगा, सॉरी कार्टून क्या बोल रहा है, मांगा जो आते थे बचपन में, वो आपने देखा होगा। सो आई एम श्योर यू should be remembering that there used to be a lot of baseball players. They used to watch baseball, play baseball, a lot of things around baseball. So वैसे आपको याद रखना है, you have to remember that in case if someone hits a ball, किसी ने भी बॉल मारा, कोहली ने भी मारा, वो मत सोचो किसने मारा, कोहली ने मारा, रोहित शर्मा ने मारा, किसने भी मारा, if anyone hits a ball and it ends up hitting ends up hitting the bowler's chest or his stomach, what will happen? The force of the ball will make him shout ooh, and then he'll be affected by the force of the ball, and probably he'll be in the air for a while and then eventually land down. So this will be the structure of his body while the ball hits him, and this will be his cap. Same way, ये है बॉडी का स्ट्रक्चर उसका, और ये उसकी कैप। इतना याद रखो सिर्फ, समझे? इसका प्रोनाउंसिएशन है ऊ, ऊ। इसका प्रोनाउंसिएशन ऊ है, ऊ, नॉट यू। ठीक है, तो अब जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला है, वो है ए, ई नहीं, ए है, तो कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट वाले में ए, आ में और ए में, तो हालांकि ये ई है पर उसका प्रोनाउंसिएशन है ए। इसको कैसे याद रखोगे? इसको आपको याद रखना है एग्जॉटिक बर्ड। ये जो बर्ड है एग्जॉटिक बर्ड है, बहुत कम दिखता है इंडिया में, तो बहुत ही कम दिखते हैं ये बर्ड्स, स्वैन या बतख या जो भी, मतलब कम ही दिखते हैं यार, कहाँ पे दिखते हैं हमें। सो जो ये कैरेक्टर है ए का, इस कैरेक्टर को इस विजुअल से मैच करना है। यू नो कैसे मैच करें? देख सकते हो, ये इस बर्ड की पोजीशन है, ये इसकी बॉडी हुई, ये उसका फेदर हुआ या विंग्स, जो भी हुए उसके विंग्स हुए ये, और ये रहा, ऐसा समझो कि ऊपर से आके कुछ उसके ऊपर गिर रहा है या कोई क्लाउड वगैरह है। इमेजिन एज इफ दिस इज द swans body. See if we do it, in case if this is the head, I shouldn't be drawing it, but yeah, if this is the head, this is the body, these are its wings, and in case this is any object that will be hitting the swan, or it could be clouds, something like that, doesn't matter, but you have to remember it as exotic bird। जैसे ही ये कैरेक्टर आपको दिखता है तो आपको याद आना चाहिए ये होगा एग्जॉटिक बर्ड। ए, ए है ये, बहुत ही सिमिलर है ये, तो आपको इजी होना चाहिए बिकॉज it looks very similar to this bird, and this bird could be any exotic bird, but we usually know it as swan. Okay, let's move to the next one. The next one is, oh sorry, I had already drawn on this, but I'll be erasing it. इसे कर लिया इरेज। अब ये है ओ, इसका तो प्रोनाउंसिएशन ओ ही है, ओ, ओ, सेम एज द alphabet O. How do we remember this? How do we remember this? The best way is to either remember it as olive, right? So how would you remember it? So this is the olive, this is the knife, ये है छुरा,
ये रहा छुरा, ये ऑलिव को काट रहा है, और ये अपना जो ग्लास है वो है ये वाला। थोड़ा मुश्किल है, बट इवेंचुअली प्रैक्टिस करते करते you will be able to remember it. Got it? तो ये हो गए हमारे वॉवल्स इतने। ये है 5 वॉवल्स। इसे सबसे पहले याद करना है। These are the first most things that we need to memorize, literally memorize, no other way around. And then we have to start with the characters. So, what are these characters called? Ka, sa, ta, na, ha. What are these characters called? So these are called consonants, same as the English language or Hindi language. More similar to the Hindi language, Hindi, Marathi, Tamil, the Indian languages. Like even in Hindi, I think we have ka, ki, ku, ke, ko, right? Similarly, this is ka, ka. How would you remember this? So how I remember it is cut the sausage. Cut, cut, cut means cut. In Hindi, what does cut means? It means cut. So this is the sausage and this is the knife. Cut the sausage. Cut sausage. Cut sausage. You can remember it that way. ऐसे याद रखो. Cut sausage. So थोड़ा इजी पड़ेगा आपको याद रखने के लिए. तो इसके बाद है आफ्टर दिस वी हैव की. की को कैसे याद रखोगे? की को की ही याद रखना है. सो दिस इज द की. ये है तुम्हारी चाबी. ऐसे वाली भी होती है यार चाबी. तो ये है तुम्हारी चाबी और इसको याद रखना है एज की. की का हो गया, की हो गया. अब आएगा कू, के और यू, कू. इसको याद रखना है कुकू बर्ड. कुक्कू बर्ड कौन होता है? कोई भी पक्षी ले लो या कौवा ले लो, चिड़िया ले लो, उसकी जो चोंच होती है वो होती है ना ऐसे. इट इज दिस वे, राइट? सो दिस इज कू. रिमेंबर इट एज कू कू कू. कोयल जो भी होती है, कोयल में भी इजी हो गया याद रखने के लिए. तो कोयल याद रखो इसे कू, कुकू बर्ड. ये देखो ये हो गया, ड्राइंग को माफ करो, ये हो गया बर्ड. ठीक है, दिस इज कू. उसके बाद आता है केग. दिस इज केग. केग यानी एक यार होता है एक लकड़े का बड़ा सा बर्तन, तबला जैसा होता है वैसे ही होता है. सो दिस इज केग. दिस इज दिस पार्ट. दिस इज दिस पार्ट. दिस इज द मिडल पार्ट. ऑल्दो यहाँ पर ज्वाइन नहीं होता यार, यहाँ पर थोड़ा वो बाहर निकलता है. दैट्स इट. दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. और अदरवाइज अगर मैं ये लाइन कंसिडर करूँगा, ये वाली, फिर तो और भी इजी होगा. दिस वे it actually resembles a cake now, right? That's it. ये वाला थोड़ा मुश्किल है, आई फील सो टू रिमेम्बर, बट प्रैक्टिस करते रहो. मेमोराइज ही करना है. एक टाइम के बाद तो याद आ ही जाएगा. तो हो गया के. ना के हो गया के. के यानी केग. केग में से जी निकालो, हो गया के. उसके बाद क्या है? का हो गया, की हो गया, के हो गया. अब है को. नाउ इट्स को.
So how do we remember ko? Ko can we remember by a coin? Although it's here, but we pronounce it as K only, coin. So ko can we remember by a coin? But there's other way also that I prefer remembering this, which is the ko fish. If you can search for a ko fish, you can find two fishes. Ko fish. There's a fish like that. So this one is a ko fish. This is another ko fish. Two ko fishes. Remember it that way. Okay, got it. So the next one is you will come here later. The next one should be sa. How to remember sa? So if you can see here, sa is very much similar to ki, right? This line is missing. This is not there, but otherwise it's very much similar to ki. So how would you remember sa? Sa is usually remembered better than sob. You can also remember it as sad, sad, sad face, sad face. So this is a sad face. अभी दिख रहा है कुछ? ये रही आंखें. This is a sad face. Sad. Next वाला है she. She कैसे याद रहेगा? She has flowing hair. This could be the hairstyle, right? This is the hairstyle. But इसमें और एक way है. There's another way that you could remember this. I remember it as a fishing hook. The fishing hook which is attached in to the bottommost part of the fishing rod. Yeah. So fishy she. So fishing, as this is fishing, right? So she fishing. So this is a fishing hook. Okay. Or either if you want to remember it as this she, that way also you can remember it. The next one is Sue. How do you remember Sue? Sue is remembered by soon. Soon the sprout will bloom. Soon the sprout will bloom. So you can consider this as the land level, ground level. This is the sprout coming out of the ground of the soil. This is the soil, and these are the roots of the sprout. Soon the sprout will bloom. It's blooming, right? This one's easy to remember. Just keep on practicing. Like whenever I'm talking about or speaking about a consonant, please make sure to write it along so that you will be able to remember it. And again, I'm sure you'll be able to recognize it also in a better way. Now Sue is done. The next one is say. 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 So how do you remember say? By the word say. This also looks like a face or a mouth. These are the upper lips. This is the teeth. This doesn't look like, but yeah, you can assume it as a nose. These are the teeth. And say anything. Okay, it's little bit difficult to remember, but
keep on practicing because the resemblance to say is not that well, so it may take some time for you to actually connect say to say, but please keep practicing. The next one is so. So this is similar to a, isn't it? Like, it looks somewhat similar, but you have to differentiate. How would you differentiate? Remember it as a sieve, a zigzag sieve. You sew it this way, you sew it this way, again this way, again this way, again this way. So it is a zigzag sew in this way, like this, not a straight direction. It's following, it's zigzag, and sew it in a zigzag manner. Remember it that way. Like if I could draw here, yeah, this is so. Although don't remember it as sew, it's so, but replace ew by so. So that way. Okay, and the next one is ta. Ta. How do you remember ta? ता को कैसे याद रखे? ता को ताली मार के याद रखे? नहीं, ता को याद रखना है एज ता ओनली. द इंग्लिश स्पेलिंग ऑफ ता, टी ए, टी ए, ता. ओके, हालांकि इसको ए मत कर देना, मतलब थोड़ा तो इस, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, बट जितना सिमिलर है उतना ही याद रखना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में पड़ सकते हो. ता, दिस इज ता. ता, ता, ता. पर ता के बाद जो है ती नहीं आता, ची आता है. ची, ची आता है ता के बाद. तो ची को कैसे याद रखोगे? अब ये है चीखने का पैटर्न. कोई तो चीख रहा है, अच्छू, 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 चीखने की आवाज है. जैसे हमने पिछले बार सा में देखा था सैड फेस, ये रहा सैड फेस. तो यहाँ पर वैसे ही चीखना है. ये है सैड फेस, पर इस पे चीखने का एक एक्सप्रेशन दे रहा है, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि ये चीखने का एक्सप्रेशन दे रहा है. तो उसे याद रखना है चीखना. अगर हिंदी आती है तो चीखना ही याद रखो, चीख, चीख याद रखो, चीख. You can remember it as cheek, but in case if you don't speak Hindi, or cheek means something else in your language, so what you would do is just remember the sound produced while sneezing, which is achoo, achoo. Got it? Okay, so the next one is su. Again, it's ta, it's the, it's not tu. Why? Because there's no tu, it's only su. So सू भी नहीं होता है, ये होता है सू, क्योंकि सू तो यहाँ पर आके गया, तो सू है सू. अगर आप, पता नहीं मुझे 90s के जनरेशन के हो, देन एक कार्टून देखा होगा आप लोगों ने. वापिस कार्टून, कार्टून ही था शायद, कार्टून ही समझ लो, विच इज टू कम ऑन द इंडियन टेलीविजन, विच वॉज कॉल्ड कितरेत्सु. कितरेत्सु. तो इसके अंदर जो सू था, ये वाला सू है, सू, सू. तो इसको कैसे याद रखे? बहुत ही इजी है वैसे तो. ये रहा सू, इतना ही है. याद रखने का सबसे इजी तरीका बोल दो कि कौन निकालता है आवाज? विच एनिमल प्रोड्यूसेस दिस साउंड? सॉरी, विच एनिमल या विच reptile or animal who produces this sound?
A snake. Yeah, so this is a snake. Got it? इसे याद रखना है हमें. Su, 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 su. After that, it's te, 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 te. Over here, it's given that remember it as 10, but I wouldn't recommend this. What I would recommend you is remember this as a tail. Tail. Tail could be dog's tail, could be cat's tail. Again, I'm saying forgive me for my drawing. It's not that great because I'm using a mouse and my command over mouse is very bad. So this is the tail. Okay, that is how you could remember te, te. All right. Next, we'll move to to, to, to. A thorn in my toe. A thorn in my toe. ओके, सो ये है आपका टो, यानी कि आपका जो पैर का अंगूठा होता है. दिस इज द टो and this is the nail or a thorn, whatever. Got it? Again, there's another way that you could remember it, but I think this one's better. Another way is a tornado, a tornado, tornado. This says a tornado, but this one it's better because this is the toe, a thorn in my toe, or a tornado, whichever way suits you. Just remember it. Okay. So the consonant T is also done. Ta is also done. Whatever. The next consonant is na. Na 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 na. So na is slightly difficult and also confusing, but this is a better way to remember it. So not, 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 and this is the not. Okay, so this is this person and this is the not. Not, 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 but don't remember it as note. Okay, it's not, 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 because it has to go with na. So you have to remember it as not. Alright, so the next one is knee. Knee is an easy one. It looks like a knee, though this is your leg. Eventually it will go and you'll have the leg, and this is your knee. Forgive me for my drawing, but yeah, this will be your knee. Okay, understand? Got it? But don't remember it as KNEE. Remember it as NI. Knee, 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 knee. Okay, this is na and this is knee. The next one is nu. How to remember nu? Nu is remembered by noodles. आप भी नूडल्स खाते होंगे यार. इंडिया में तो हर कोई खाता है मैगी, टॉप रेमन, और क्या होता है यार, यूपी नूडल्स, हाका नूडल्स, हर कोई खाता है. सो हमें इसे इसे कैसे याद रखना है कि ये जो है, ये पार्ट जो है, ये एक नूडल है इतना, और ये रही
चॉपस्टिक, ये एक नूडल है, दिस इज अ नूडल एंड दिस इज अ चॉपस्टिक, दैट्स इट, दैट इज हाउ you are supposed to remember it. Nu. The next one is ne. You got nu, right? Like, this is nu. The next one is ne. The ne can be remembered by this word net, a big fish. Although it's little difficult to remember, but I'll I'll give you another one which will help you with remembering it. So I usually remember it as a snail. Snail. So this is ne, right? Ne. So this is the head of the snail. This is the shell. So the shell goes down and someone inserts a nail inside a snail. Got it? It is it is disturbing, I agree, but that's how you need to remember. Nail in a snail. So this is your snail and this is the nail. That is the best way to remember. Got it? So let's move to the next part, which is no. No smoking. So this sign, नो एंट्री, अपने यहाँ पे होता है, बहुत जगह होता है नो एंट्री, नो पार्किंग, कितना होता है यार ये साइन, तो हम लोग ने देख देख के ही मतलब याद कर लिया होगा। तो इसी तरफ ये भी है नो, नो, बट डोंट सर्कल इट एंटायरली, लाइक द स्ट्रोक ऑर्डर इज दिस वे। ओके, दिस इज नो, हो गया। सो इसके बाद जाते हैं हम हाँ पे। हाँ, हाँ को कैसे याद रखें? हाँ को कैसे याद रखे? हाँ को कैसे याद रखे? तो हाँ को याद रखना है हमें हा 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 हा, एच और ए। कैसे? ये रहा आपका एच, ये रहा आपका ए। जैसे ता कैसे था, वैसे सिमिलर ये है। ये रहा एच, ये रहा, हालांकि ड्रॉ करते वक्त तो ऐसे मत करो, ऐसे करके फिर मत करो, बट यूजुअली यही होता है। हाँ, ये है अपना ए, ये है अपना एच। समझ गए? तो हो गया। उसके बाद हम जानेंगे ही। वो तो समझ ही आता है, यू कैन लाइक फिगर इट आउट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। सो दिस इज द laughing face, this is he, because in case if I make a sorry man, in case if I make a face, it looks like the person is laughing, right? It looks as it is laughing. पूरा तो अच्छा नहीं दिख रहा, बट लग तो रहा है, you know, because this is the action which you do, this is the expression that we give while laughing, so you should be able to remember it. स्माइल को कैसे बता दे यार, ये स्माइल होता है, तो वैसे ही स्माइल इमोजी कैसे होता है, ऐसे होता है, दो आंखें, एक ही हंसता हुआ चेहरा, वैसे ही ये है हंसता हुआ एक चेहरा। ही, इसको कंफ्यूज मत करना। हा 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 हा, हा कैसे था, हा ऐसे था। ये ही। अब ये है हु 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 हु। हालांकि ये फू भी नहीं है और हु भी नहीं है, हु ऐसा है ये कुछ। जैसे माउंट फूजी आपको पता होगा, फूजी बोलते हैं हम लोग, फूजी, वो लोग वैसा नहीं बोलते। आपको एक एक करके मैं हर एक जो भी कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है, उसका मैं जो जिस तरीके से जापानीज इसे प्रोनाउंस करते हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम आगे हु पे, हु हु, तो हु को याद रखना है हमें, हु एज एन
ulta question mark, as an inverted question mark. This is, what is this? You could like put up some apostrophes over here, but this is the main part, the ulta question mark, the inverted question mark, which is this. ऑलराइट, उसके बाद है हे, हे, हु के बाद है हे, हे यानी कि ये, और ये है जन्नत का रास्ता, द वे टू हेवन, हेवन 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 हेवन, वैसे याद रखना है, समझ गए? दिस इज द वे टू हेवन, द वे टू हेवन, ऑलराइट। अब उसके बाद आता है हो हो हो, इसका कैसे याद रखेंगे? होल नोट। अगर आप म्यूजिशियन हो, आप गाना कुछ बजाना, गाना बजाना, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो तो आपको शायद पता होगा, जो नोट होते हैं म्यूजिकल नोट, वो कुछ इस तरीके के होते हैं। तो वैसे ही ये है म्यूजिकल नोट, हाफ अ होल नोट। पूरी नोट कुछ ऐसी होती है ना, तो ये उसका आधा है, हाफ अ होल नोट, तो उसका आधा, इसलिए हाफ अ होल नोट। आपको वैसे ध्यान रखना है इसका, जैसे कि ये तो ठीक है, इसे तो आपको याद रखना होगा, पर ये जो नोट है म्यूजिकल नोट, उसका आधा है, हाफ अ होल नोट। ये हो गया हो तक। अब इसके बाद हम सीखेंगे माँ, माँ 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 माँ। तो ये समझो कोई बच्चा है जो रो रहा है, माँ 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 माँ। ये बच्चे का सर, ये बच्चे के पैर, और ये बच्चे के दो हाथ। गॉट इट? थोड़ा बहुत यार समझ लो, बट ऐसा कुछ होता है ये। माँ, माँ, माँ के बाद है मी, मी। अब मी को कैसे याद रखना है? मी को याद रखना है हिंदी में, हिंदी में होता है म, कुछ इस तरह, ऐसे ही होता है। तो समझ लो यार, मात्रा उसको यहाँ पे है, मराठी में भी ऐसे होता है कुछ, मी। तो वैसे ही समझ लो, इजी पड़ेगा, मी। हालांकि थोड़ा सा उसका एंगल आपको चेंज करना होगा, पर होता ही है वैसे ही, मी। उसके बाद है मू, मू, मू। मू को आपको कैसे याद रखोगे? मू को याद रखने के लिए आपको काव को याद रखना होगा, क्योंकि काव बोलती है मू। और यहाँ पर जो काव है उसको ही दिखाया गया है, यह है काव की पूंछ, यह है काव का सिंग, यह है काव का मुंह, यह है काव का पे शरीर, और ये रहा काव। थोड़ा क्या मतलब इतना ज़्यादा सिमिलर नहीं है, बट स्टिल अगर आप इसे ड्रॉ करना चाहेंगे तो फिर आपको एक काव का रेफरेंस लेकर ड्रॉ करना थोड़ा इजी पड़ जाएगा। तो इसीलिए इसे याद रखना, मुंह, 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 मुंह। मुंह के बाद है मैं, मी नहीं, मैं मैं मैं। मैं को कैसे याद रखोगे? मैं को याद रखने के लिए आपको याद रखना है आँख। जापानीज में मैं यानी कि आँख होता है, मैं। इससे आपको एक जापानीज की वोकैबुलरी भी सीखने को मिल जाएगी, और मैं भी याद रहेगा, मैं, ये है मैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा होगा, कहाँ पे गया वो, इससे, नू से,
मैं और नू, पर नू में ये था और मैं में वो नहीं है, जो यहाँ जो था वो नहीं है, इसलिए वो है मैं यानी कि आँख। आँख। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या दिया इन्होंने मैं के लिए। आँख ही दिया ये लोग ने, ये भी आँख ही है मैं। तो ये हो गया मैं। अब आया मो, तो इससे मो कैसे याद रहेगा? मो फिश विद दिस, कैच मो फिश विद दिस। मो फिश। मो फिश क्या होता है अब? तो इसको आप लोग याद रखोगे मोर फिश, पर आर ही निकाल दो मो फिश, और इसे मो फिश क्यों याद रखना है? क्योंकि ये रहा फिशिंग हुक और ये रहे वो वर्म्स। दीज आर द वर्म्स, दिस इज द फिशिंग हुक, एंड सो इज दिस मो। 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 This is mo. Let's go to the next consonant, which is या। सो या को कैसे याद रखेंगे हम लोग? या को याद रखना है याक। Very similar to yak. This is the yak. This is his head. This is his horn. Yak. 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 हो गया याक, ऐसे याद रखो। हो गया याक। ओके। नेक्स्ट वन है यू। यू को कैसे याद रखना है? यू को याद रखना है हमें यू टर्न। ट्राइंग टू मेक अ यू टर्न। मैं मानता हूँ कि इतना सिमिलर नहीं है, पर दिस लुक्स लाइक अ रोड, राइट? दिस लुक्स लाइक अ रोड, एंड you could remember it like a U-turn. Although it's not much similar, let's see what this one has. I think this one should also have the, okay, this here it has a fish, a unique looking fish. Would it be easier with a fish? Yeah, I feel so. This looks more of a fish rather than a U-turn. So, okay, let's go with the unique fish. Unique fish. Unique fish. Let's go with a unique fish. This is a unique fish. Unique. Keep writing as long as I keep saying about it, because that's only how you would be able to remember it. You have to practice it daily, in the morning or in the night, whenever you feel like, but you have to keep a consistent habit. So this is a unique fish. Unique fish. Unique fish. Okay. The next one is yo. This one's easier and everybody knows the yo yo. Yo yo yo. So this is the yo yo. This is your finger. Okay. You're playing with the yo yo using your finger. So yo yo. Got it? Alright, so yeah, that's it for yayo yayu yo. The next one is ra. 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 So ra is remembered by the word rabbit, because this looks like a rabbit. It also looks like a kangaroo, but it better looks like a rabbit, right? This is a rabbit. If you can see here, the rabbit is jumping. So this is ra. Rabbit. Ra. Rabbit. Ra. Rabbit. Ra. Rabbit. Remember it that way. The next one is re. Re.
Don't remember it as reeds, remember this as a river. So this is one river bank, this is one river bank, and the river flows from here. Alright, so that will be an easier part. So this is re, re. The next one is ru, ru. So how would you remember ru? So firstly, remember, don't remember it that way. Remember it as if this is your hand and you have a ruby in your hand. This is a ruby. This is your hand, and your hand has a ruby. Ruby. Ray. The next one is ray. So as you can see here, ray is similar to ne. Ray is similar to ne. Where's ne now? Yeah. See, it's a lot similar to ne. But how will we differentiate? So ne over here, it has a knot, but ray does not. And the shell of the snail, this doesn't look like a shell because it's very much sharp, right? So remember it as rain and lighting. Okay, so this is the lighting, and this is the rain. Although it's, I understand it's not at all like looking as rain and lighting, but still for the sake of it, remember this as rain and lighting. The next one is row. Row now looks like roo, but robbed. Okay, now you have to remember it as the rubies were robbed. So that ruby is no longer over here. It was robbed by a robber. So robbed rubies, robbed rubies, robbed rubies. Okay, the rubies were robbed. Got it? That's how you have to remember this. What else is remaining? Wa, wa, wa. Again, similar to ne and re, isn't it? But now you have to remember it as a wasp. This is where it looks somewhat similar, better than rain and lighting. See, this looks like a wasp. Just this stroke is somewhat different, but other than this, I think so. This looks like a wasp. So you could remember it as a wasp. Now, for the characters that look similar or the particles that look similar, what you could do is uh, first of all group those similar looking particles together and then figure out what is the difference between all of those characters. As soon as you realize what difference is present, you will be able to slowly memorize those particles without any trouble. So do it like how I said, and I'm sure you will end up in a better place. So wasp, and after wasp it's wa. After wa, after wa it's wo. There's no we, there's no woo, there's no way, there's wo. The cowboy said whoa. Okay, so this is the cowboy. This is the cowboy. He's dancing. You can see here. Whoa, 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 whoa. And this is, imagine this as a water dancing circle. Like he's supposed to step inside and start dancing. Something like that. Okay. You have to remember it that way. तो इसे अज्यूम कर सकते हैं एज अ
cowboy. This is a cowboy. It also looks like a human if you see. These are the two legs. This is the body. These are the arms. So a cowboy said, "Whoa, I'm coming to fight. Whatever, I'm coming to ride a cow or whatever, man." It's like similar to a cowboy, and this is the ring which is entering to fight with someone. So वो जोर से बोलेगा, "Whoa, whoa, 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 whoa." Alright, so उसके बाद है ने, न, 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 साउंड ऑफ एन, एन, नानू नहीं होता इसके अंदर न, न। तो ये है एन, तो इसे तो याद आएगा क्योंकि दिखता ही एन जैसा। अगर इसको निकाल देंगे तो ये नहीं, एन ही है, एन ही है, ये सिर्फ ये इसको थोड़ा छोटा करना है। तो दिस इज एन, ओके। यहाँ तक तो सब समझ गए होंगे, मैं भी समझ गया यहाँ तक। अब देखते हैं बाकी की चीज़ें। तो ये आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं, ये क्या होता है। ये आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये फिर ये। तो ये होता है डाकुटेन और ये होता है हैंड डाकुटेन। तो ये है, ये क्या है, ये ऊ है ना ये। तो इसका और एक यूज़ है, वो हम लोग बाद में देखेंगे जब हम वर्ड्स एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो वो समझेगा नहीं, जब वर्ड्स, जब वोकैबुलरी समझेंगे तब वो समझना ईजी होगा। अभी के लिए तो डाकुटेन और हैंड डाकुटेन को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, ये का, की, कू, के, को है ना। का, की, कू, जैसे ही डाकुटेन लग जाता है इसके ऊपर, तो वो गा, गी, गू, गे, गो हो जाता है। जी का है, जी, क, ग, क, ग, ऐसे याद रख सकते हो। क, ग जैसे टाकुटन लग जाता है वो होता है ग, गी, गू, गे, गो, ग, गी, गू, गे, गो, ग, गी, गू, गे, गो। समझ रहे हो ना। डाकुटन लगते ही ग, गी, गू, गे, गो। और जैसे इसके ऊपर लगता है जो सा के जो है ज हो जाता है, ग, ग हो जाता है, वैसे स होता है, ज। तो इसके अंदर ज, जी, जू, जे, जो, ये जी नहीं है, पर ये जो है ये जी है, जी। ये जी नहीं होता क्योंकि जी जापानीज में नहीं होता है, जी होता है। यामा का जी, समझ रहे हो। जी, 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 ये है जी, समझे। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ने देखा कि जो जो ये होता है सा, शी, सू, से, सो, ये होता है जा, जी, जू, जू, जे, जो। वैसे ही ता, ची, सू, ते, तो होते हैं ना, वो बन जाते हैं दा, जी, ची, जी बन जाता है, ची, जी होता है। और जो सू होता है वो जू होता है, क्योंकि आप इधर भी देख सकते हो, ची, शी, सू, सू सिमिलर है। इसके लिए यहाँ पर जी, यहाँ पर ती, दी नहीं आएगा, दी, दू नहीं आएगा, दा, दी, दू, दे, दो, दा, जी, जू, जे, जो। समझ रहे हो। अब इसके बाद जो एज ग्रुप है, हा, ही, फू, हे, हो, उस पे अगर ये रहा हैंदाकुतेन, ये हैंदाकुतेन जब लगता है तो ये बनता है सेम। यहाँ पर एक हैंदाकुतेन अगर एक आ गया ऐसे ही हर इसमें, तो ये होगा पा, ये है हैंदाकुतेन। जैसे कि ये था दाकुतेन, ये होता है दाकुतेन और ये होता है हैंदाकुतेन। तो हैंदाकुतेन है, जैसे लगता है वैसे हो जाता है पा, पी, पू, पे, पो। Alright, ha becomes pa, he becomes pi, pu becomes pu, he becomes pe, ho becomes po. Same ways, if we apply
Dakuten. So this is Dakuten. If we apply Dakuten to this H group, so it becomes the B group. Ba bi boo be bo, ba bi boo be bo, ba bi boo be bo. Alright, the H group first becomes the P group when you apply a hand Dakuten. But when you apply a Dakuten, it becomes the B group. Remember? As simple as that. Okay, so after this, what we have is the Kya group, Sha group, Cha group. What is this? What is Kya, Q, Kyo? Is this Hindi? No, it's not Hindi. So this is the, what's this? This is key. Remember the key. So ki and ya becomes kya, right? Same way, ki and u becomes q. So where is why the yak? Where is the yak? This, yeah, the U turn or the unique fish, whatever, whichever you could remember better. The yo-yo. So when both of this gets combined, it becomes kya, q, q. Similarly, sha, shu, shu, sha, shu, shu. Here it's not sha, shu, shu. It's sha, shu, shu, sha, shu, shu. Same way, cha. This is the chi. This is the she. Right. This is the ni. This is the he. Right. This is the me. This is the, what's this? What's this? What's this? Is this three? Let's see. Let's go back to our. Is this re? That's not re, right? What's that then? Let's see. Where were we? Yeah. Ra, Ryu, Ryo. Why is it Ra, Ryu, Ryo? What's this? Doesn't look like re, right? No, it's re. So what happens in Japanese? There are quite a lot of forms. So this is re, but if you can see here, I copy this, I paste it here. Looks like re, right? D. Right? It looks like re. It's re. All the consonants which go with the vowel I are present over here. This is gi. Ki with a Dakuten, it's gi. Same way, what's this? The she with a Dakuten becomes g. And then it's the yak, the ya, ja, ja. Same way over here. This is the he with a Dakuten, which becomes ba. Sorry, it becomes b and then bya. After this, same way, the he with the hand Dakuten becomes he, and then, sorry, it becomes p, and then with the ya sound of the ya, it becomes pya, pya, pew, pyo, bya, byu, byo, ja, ju, jo, gya, guyu, gyu, gyo, rya, yu, ro, mya, myu, myo, ya, yu, yo, nya, nyu, nyo, cha, chu, cho, sha, shu, sho. So the easiest way to remember the parts, you know, which don't go, right, which don't go with ya, but instead they become a. So if you observe over here, why it's ja, ju, jo, why it's not ja, ju, jiu, jo. So the ones like sh, the ch, right, she, chi, they won't have a ya with them. Instead it would directly become sha, shu, sho, cha, chu, cho.
right? Similarly, as you can see here, the she with the hand dakuten becomes ji, ja, ju, jo. Got it? So that's it. Those were all the particles, the characters, vowels, consonants, all I explained in this video. And in the next video, I'll be covering the katakana. So, sayonara. We'll meet you in the next video. Bye.